Hi, good to see you. Hi, sorry, I'm 4 minutes late. No, no problem, no problem. I think इतना चलता है. So they Yeah, lost your. yeah, I was just digesting my biryani. Oh, wow, I'm so glad you like it. So I loved it, I loved it. you loved it. Yeah, Oh, you are in Indore right now. I'm in Indore, yes, from like past 4 months, right Oh before no. the lockdown, I came here. Mumbai jana tha beach mein, like for a week I went there because I had so many pending work there, so much of pending work, so I went there, completed and came back. Talented. So आपका इतने जो serials आप करते हैं, if you are so how are they shaping up if the shooting is but you are shooting for them, how are they coming up or they have been paused because you are a part Actually, of so. yeah, the show that I was doing was Manmohini on ZTV. Hmm, And before the lockdown, of course, we all had to pause the shooting. hmm. And after that, like the channel decided that it should be discontinued. So we have closed down on that. Like the curtains have closed on that. That's it. So Abhi, I'm not shooting for anything. I have my own YouTube channel. So for Okay. that I'm working. Yeah, but since itne dino se na, even in my colony there were so many cases and all coming up. Like Oh. every day new cases coming up. So I was not even calling anybody for shoots and all. So even that is paused for now. So how situation in Indore? Is it getting any better after Corona? See, of course it's better since like as what we are seeing that it is Hmm. not that fatal now. Hmm. The corona, The, even like so many people are getting it but they're recovering, so recovery rate is quite good, so it is not that deadly anymore. So that the, is the only good news, but cases are coming out every day. but the mortality rate has gone down below 1%. So people are, and most people don't need to be I know, hospitalized. लोग ना उसे ऐसे ऐसे ले रहे हैं, अब लोग कोरोना से डर नहीं रहे, लाइक आ बेटा तू आ वो हो गया कि अब तो आ, हम देखते कुछ नहीं होगा, हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है. हम इंडियन हैं, हमने वी नो इट. हाँ, तो नहीं आई आंसर. मैं आपका इंस्टा पेज देख रहा था. यू डिस्क्राइब योरसेल्फ एज नोमैड फॉर लाइफ, एक्टर बाय बर्थ. Yes, So I that's true. am a nomad, as in I love traveling, and not just traveling, even wherever I am. Excuse me, I'll just switch on my AC because हाँ. in just a second. Yeah, yeah, yeah. I'm back. I'm back. Okay. So because I was getting late, तो मैं AC पे on करना भूल गई, अभी गर्मी हो गई थी बहुत. So yeah, I describe myself as a nomad. It's like complete Banjaran हूँ मैं. And I love roaming around. I love traveling. I cannot sit at home. I'm somebody, if I'm at home for even like for few hours, then rest of the hours I want to spend outside. Lockdown has changed me a lot though, because मजबूरी का नाम जिंदगी. So when you say nomad for life, like this, I think means you're an extrovert. Means like आप घर से या आपने travel भी बहुत किया है within India, outside India. Are you were fond of traveling? Yeah, yeah, a lot, a lot. Whenever I get time, actually मुझे बहुत ज़्यादा time भी नहीं मिला. Since I went to Bombay, like thankfully with God's grace I started working. So वो बीच-बीच में time भी ज़्यादा नहीं मिलता था. फिर जितना भी time मिलता था ना, I used to go out. और अभी तो ऐसा है कि अब जब time ही time है तो बाहर जा नहीं सकते, international flight shut है. So सब चीज़ों पे एक pause लग गया है. So when you say actor by birth, तो आप Yeah. बचपन से स्कूल कॉलेज से you've been acting? Actor by birth, as in मैं मेरी मॉम की लैंग्वेज में कहूँ तो मैं ड्रामेबाज हूँ. नहीं, I'm a naughty, as in बचपन से ना, मतलब एक्टिंग मेरे अंदर थी. अब वो रियल लाइफ में करनी है, सिचुएशंस में करनी है, या कैमरा के सामने करनी है, मैंने क्वाइट मेथड रोल्स ही किए हैं. बिकॉज बचपन से जैसे कभी स्कूल नहीं जाना होता तो आई यूज्ड टू एक्ट कि मेरी तबीयत खराब है, एंड एक्चुअली यूज्ड टू गेट सो मच इनटू दैट लाई ऑफ माइंड. मतलब मैं उसको सच मान बैठती थी कि एक्चुअली मेरी तबीयत खराब है. सो वो हो भी जाती थी, इतना ज्यादा घुस जाती थी अपने किरदार So में. life is a self-fulfilling prophecy. What you believe in happens. Yes, 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 totally. Life, whatever I believe happens. मतलब मेरे साथ मोस्टली यही हुआ है that whatever like with God's grace, I'm really grateful for God कि whatever I believed and I worked for it now, even a little bit, I've achieved that. नहीं, आई थिंक उसमें मेरे ख्याल से आपके टैलेंट और पॉजिटिविटी और आपकी आई थिंक योर पर्सनैलिटी का भी रोल है.
But I think, but I have also, I was going through your Insta. I think acting आपके कहीं ना कहीं है अंदर खून में. I think you in person, I have seen you impersonify a lot of people, do TikToks, acting, you know, different characters. वो अंदर से आपके अंदर है, right? So it's Yeah. easier for you, and I think you enjoy doing it. I absolutely enjoy doing it. So, I was doing these multiple characters for my YouTube channel. I shot 2 videos, and right after that, you know, people were like not then prohibited from entering the colony. So now my team who used to shoot for me are not coming. So I'm like I'm missing that again. But soon I'll resume, and of course I'm thinking on like many more characters that I can impersonate and. Whatever I can do out of this talent, whatever like how many people I can entertain out of this, I'll be very happy. Like I want to entertain the mass and be known as a versatile actor. That's the only thing that I always expected from myself. No, that's great, and at least you know yourself well. You know your strengths, and you're working on them. So that's good. Yeah, you can say that I know myself well. No, which is not easy. So, and see, but you like doing a particular kind of characters, like a vivacious girl, happy-go-lucky person, or you like sad characters or negative characters as well? If you see my bio, if you see my profile, I have done them all. Oh, Like, yeah, in a very this short and sweet journey of mine till date, like of course a long way to go, but like from my first show, ये रिश्ता क्या कहलाता है, till Manmohini was my 6th or 7th show. Okay, have to keep account on it. So मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स किए. ग्रे कैरेक्टर मेरा एक बहुत पॉपुलर हुआ था ससुराल सिमरका से. Anjali, people still know me as Anjali from Sasral Simarka. It was out and out great character, and I thoroughly enjoyed playing that. It was so much fun. And then in Super Sisters, I played a very nice, seedy, sadi, but yet powerful from inside girl. And you know, so yeah, I love doing various characters. Of course, that is one thing an actor should have inside them कि उनको करना है. ऐसा नहीं कि मजबूरी में अरे मिल गया अभी काम करना है तो करना पड़ेगा. नहीं, it should be inside you to do that. inside you. So you know, if you mind, you know, आप इतने talented हैं, कुछ characters impersonate करके दिखा सकते हैं. We love it. एक आध. अभी You can so fast. I've seen you on Insta. आप फटाफट मैंने देखा है. actually मुझे ना हमेशा से since the time that film जब भी मैं came, so that character Geet, of course every girl wants to play that character. मैं ना तब से ही मतलब उसको exact copy करती थी. and मुझे मैंने कभी जैसे उसके TikTok भी अगर बना के डाले हैं ना उस particular character के गीत के, तो मुझे काफी यही comments आते थे कि it's exactly like you have just replicated it. So yeah, I can do that. So the situation is that when she says कि तुम तो बहुत ही अमीर निकले यार, मेरी बहन के साथ भाग जाओ ना, सबकी लाइफ सेट हो जाएगी. So like ऐसे छोटे-मोटे dialogues I keep saying and तो इसमें आप पर इसको आप कैरेक्टर में रह के करो ना एक बार जो आपने अभी करा. Just do it. this is how she said. अच्छा, This is okay. how Geet said. And this is one dialogue that I was doing कि तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ बताओ, मस्त है ना एकदम. अब अगर तुम्हें मैं अच्छी लगती हूँ तो तुम्हें मेरी बहन रूप भी बहुत पसंद आएगी. बिल्कुल मेरे जैसे, सेम टू सेम. So such actually it's hard for me to do it live. You know, but I can see it. You know, most people will not be able to do it. So you have that talent. और थोड़ा negative. You can go negative. You can change your emotions negative or grey. ये तो स्माइल कर रहा. I think negative and positive कुछ नहीं होता है. हर इंसान के अंदर ना एक गॉड होता है, एक डेविल होता है. तो आपको एज एन एक्टर आपको वो अपने अंदर लाना होता है कि आप अभी डेविल ला रहे हो अपने अंदर का या गॉड ला रहे हो. लाइक आई एम समबडी, मुझे दुनियादारी में कौन क्या कर रहा है किसी से मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. I live my own life very happily and I also empathize with people. So you can say I'm out and out a good girl, but I played a negative role. So yeah, I can do it. मतलब अंदर से के बस एक बार ये लॉकडाउन खत्म हो, इसके बाद पड़ोस वाली आंटी को मैं दिखाऊंगी
लड़की आखिर होती क्या है, बहुत बुराइयां की है मेरी उस चुड़ैल के But no, but I could see that tinge in the eyes and the body language. No? That changes everything. So I think it's really art. But but do you also define? Of course, आपको एक script मिलती होगी, एक character मिलता होगा for a serial movie, anything. But then also you also develop the nuances for that character, certain body language, how you want to that character you want to portray. Of course, see when you talk about positive and negative roles, वो तो एक मैक्रो डिवीजन हो गया, कैटेगरीज हो गई. बट हर नेगेटिव रोल भी अलग होता है, सबकी एक स्टोरी होती है. हर पॉजिटिव रोल भी अलग होता है. कोई पॉजिटिव में बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होता है, हैप्पी होता है. कोई पॉजिटिव में पोलाइट होता है, नाइस, मतलब एकदम स्वीट, डेबोनेर टाइप्स ऑफ. सो वो अलग होता है. नेगेटिव में कोई मतलब जिद्दी होता है, कोई एंग्री होता है, कोई जो हम टीवी सीरियल की वैम्स जिस तरह से हम देखते हैं तो फिजूल में चालबाज होता है. तो वो उससे भी अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं. When I played this negative character of Anjali, so the backstory was कि भाई लड़की ना बचपन से उसको माँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा है, और उसको जिसने पाला है वो she was the main vamp of the show. तो वो her upbringing was like that she was such an angry child. मतलब वो दिल से कुछ अच्छा भी करना चाहती थी ना, तो वो उसको देख के फिर गुस्से आ जाता था कि नहीं, इन्होंने मेरे साथ गलत ही किया. सो मैंने वो उस तरह से उसको अपनाया था कि मुझे जस्ट दिखाना नहीं है कि I'm playing a negative character. Like I have to feel whatever is there. I have to feel my story, and then audience will decide that whether what this girl is doing right or wrong. So it's like that. हर कैरेक्टर के डिफरेंट लेयर्स हैं. एक लेयर है उसका बहुत एंग्रीपन, फिर कैरेक्टर्स, एंड आल्सो यू हैव टू लीव सर्टेन पार्ट फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑडियंस, नॉट डू इट. Exactly. Like अगर आप एकदम ही दिखा दोगे कि हाँ आप तो नेगेटिव, आप खुद ही सोच लोगे कि आप नेगेटिव करो तो दुनिया भी वही सोचेगी. But sometimes you do what you want to do according to the script. कुछ चीजें जो स्क्रिप्ट में भी लिखी होती थी, मुझे लगता था कि शायद मैं नहीं भी करूंगी ना, कुछ अपने हिसाब से करूंगी, तब भी वो ऑडियंस की इंटरप्रिटेशन पे yes I can leave it to them to judge. And honestly I got a lot of applause for playing Anjali. I still can't forget how people loved me. I thoroughly enjoyed doing that character. Like people loved me like anything despite me playing a grey character. No, but I think what you said is good. Some people, I'm also like a Bollywood, Hollywood, or a web series. So people sometimes overact. They don't leave anything for interpretation. उसमें वो जो 20% छोड़ना चाहिए ना, so that people can interpret, and that space is created where people can use their own imagination, right? I think that's important. देखिए सबका अपना अपना होता है, कौन किस तरह से काम करना चाहता है. I will not say anything about anybody, but I'll say that some people they just want to do work, and for some people it's really their passion. For some people they just want to finish work. For some people they really want to live that work. So I'm somebody who likes living that work. No, I can. So I think on a EQ level, IQ level भी उस कैरेक्टर को काफी एनालाइज करके उसकी लेयरिंग समझनी पड़ती होगी, तभी आप उसको एक्ट कर पा सकते हैं. नहीं तो अगर एक ही सिंगल ट्रैक चलेंगे तो कुछ नहीं होगा. तो बोरिंग होने लगता है ना. बोरिंग हो जाए. give layers to your own character, and जितना ज्यादा आप उसको सटल रख के yet expressive रख के आप वो चीजें करते हो, तो वो और ज्यादा रियलिस्टिक लगता है, और ये नहीं लगता कि बस आप थोपना चाहते हो किसी को अपने इमोशंस. नो, sometimes you just, even when you want to cry, you just be blank. So that is also, the audience will understand that you really want to cry, or you're crying from inside. It's not necessary that you have to take that glycerin and start crying with that. So I don't do it. I personally don't do it. No, I think, I was reading somewhere, Nawazuddin Siddiqui said about one of his scenes in Lunchbox. He said कि मैं उतना ही करके छोड़ दिया है कि मैं रोऊंगा नहीं. इस सीन में रोने वाला सीन था, पर इतना छोड़ दूंगा कि सब समझ जाए बस ये रोने वाला है. Exactly. Right. So that is good enough, right? So I think that's where the boundaries have to be drawn. That's what I believe, and that's like the kind of people, like you say, Nawaz sir. Only that kind of people I follow. Like my favoriteest was Irfan sir, late Irfan sir, and I love Pankaj Tripathi sir. He's such an inspiration to me, and Nawaz sir, of course, Manoj sir. Oh my God, these are the kind of heroes that I get inspired from. So who are the actress or female actress you like? I see. If you talk about acting, I really like Vidya Balan ma'am. I love her acting. I love the way she spices up her character. Even the most boring character will be spicy.
वो I really love, and I like Alia as an actor. अभी लोग बहुत ज़्यादा nepotism के बारे में बोल रहे हैं, but I think हर जगह से एक अच्छा प्रोडक्ट निकल के आता ही है. So she is, I think, the best product of nepotism. You said it quite openly. Yeah. किसका डर पड़ा है? अपने टैलेंट पे जिंदा है. हाँ, exactly. Like, see, I think झूठ बोलने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, तो 4 लोगों की वाहवाही भी ले लेंगे, बट आप सच बोलोगे ना, शायद एक भी इंसान के साथ खड़ा रहेगा ना, but then that will be the true person. So I believe कि quantity मत देखो, quality देखो, always. आपने लाइफ में बहुत कुछ एनालाइज करा हुआ है. You have a lot of depth. I have heard this a lot from a lot of people that yes, I had to have a lot of depths. मतलब कभी-कभी मैं कुछ बातें बोलती हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी मतलब मुझे ऐसे ना मजाक में बोलते थे, बहुत डीप था ब्रो, ये बहुत डीप था. तो आपकी what is your like but let me first come to food. I understood you are a foodie because we are a food company. You are a foodie also, right? That's what I I've heard. live for food. I worship food. I eat food. I be food. तो आपको देखकर तो लग नहीं रहा, आपके तो लग नहीं रहा गाल फूले हैं या कुछ ऐसा लग रहा है. सर कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है ना. जैसे सुबह अगर जैसे I had biryani in the lunch, तो मैं रात को I just compromise with some curd or very boring सा salad or anything that my mom will try to make interesting, like eggs वगैरह ले लिए, so वो ऐसा हो जाता है कि कर लेती हूँ मैनेज. तो foodie what do you mean? Like have you tried all Mumbai restaurants, इंदौर के रेस्टोरेंट? इंदौर में तो मुझे लगता है foodie town है, right? इंदौर तो foodie town है. Indore is the food hub, like hub of food, and Indore is the, I think after Delhi, Indore is the best place to have food in India. And actually कभी-कभी तो हम दिल्ली से भी कंपेयर करते हैं ना for particular dishes and particular जो हमारे यहाँ की कुछ अलग ही dishes है. Like आपने कभी वो नहीं खाया होगा, हम जिस चीज को पैटिस बोलते हैं, आपके यहाँ पे पैटिस कुछ और होता है. कभी इंदौर आपको बताइए पैटिस क्या होता है. हमारे यहाँ हॉट डॉग, आपने पूरी दुनिया में हॉट डॉग खाए होंगे लंबे लंबे, ठीक है. हमारे यहाँ हॉट डॉग होते हैं अलग तरह के, जो कि इतने डिलीशियस होते हैं, जो कि आप you cannot have it anywhere else. यहाँ पे इंदौर में कोई 56 भोग स्ट्रीट टाइप कुछ ऐसा है ना क्या? 56 स्ट्रीट है एक्चुअली. वो स्टार्ट हुआ था 56 शॉप्स थी उस स्ट्रीट पे, और सारी फूड शॉप्स थी. अब तो बहुत ज्यादा हो गई है बिकॉज वो इतनी पॉपुलर स्ट्रीट है कि अब उसको पूरा मतलब इट्स लाइक आप आएंगे ना कभी 56 तो आपको लगेगा कि आप सिंगापुर की किसी फूड स्ट्रीट पे हो. मैं सिंगापुर 8 साल रहा हूँ, तो मुझे आइडिया. ओह हाँ, तो मुझे कोई और बोला था कि मैं सिंगापुर नहीं गई, पर मुझे किसी और ने बोला कि जिस तरह से 56 को बना दिया ना, वो सिंगापुर की एक स्ट्रीट से रिजेंबल करता है. much better here. तो देखिए आपको मैं थोड़ा सा, आई थिंक यू लाइक, व्हाट डिड यू ऑर्डर फ्रॉम बिरयानी बाई किलो? थोड़ा सा बताइए, व्हाट डिड यू लाइक? I loved everything. I ordered mutton and chicken biryani, that Malamal chicken biryani and mutton chicken biryani and Hyderabadi mutton biryani for my brother and my dad. And I ordered myself veg biryani, and it was loaded with veggies. Oh my god, I loved it. For see, Indore we have a special veg menu. तो कटल बिरयानी हमारी इंडिया वाइड है, पनीर बिरयानी, but Indore we have some special veg products also, which is mud. We have a Peshawari chole biryani. Also the veg, we have a big menu for. I ordered that veg biryani, that plain veg biryani. I forgot the name. But we have like katal biryani, paneer biryani, Peshawari chole. So veg also has a big menu. Did you order any kebabs or veg kormas or mutton korma? But yeah, we ordered chicken korma. Chicken korma. Mutton was not. I think उसके आगे कुछ ऐसे ब्रैकेट में था that it's only for Delhi, NCR and Mumbai. अच्छा, is there, but maybe अभी थोड़े टाइम के लिए शायद कर रहा हूँ. पर but how did you like chicken korma? कैसा लगा? I can give you the reviews from my dad. Yeah, because I did not eat it. I'm vegetarian. You are vegetarian. I'm vegetarian. Okay. But my dad, he was saying that he was feeling nostalgic कि उनके कोई दादा के कोई friend जो कि he was from a Muslim background, वो ऐसी proper लखनवी हैदराबादी बिरयानी बनाते थे. And chicken korma, my brother loved the most. He enjoyed it so much. जिनकी शक्ल देख के लग रहा था कि yeah, food is very good. And how did? इतना अच्छा था तो non-veg of course. And did you order any dessert, firni or gulab jamun with rabdi?
Yes, we ordered firni and firni was one of the best firnis that I've ever had. मुझे मुंबई में एक दो जगह की firnis बहुत पसंद है, but बिरयानी बाई किलो की मैंने पहली बार खाई and amazing. Like right amount of sweetness was there and lot of that firni flavor and the okay अभी तक I am tasting it. नहीं, थैंक यू सो मच। देखिए, आपके बारे में तो सबको पता है। मैं बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन बिरयानी बाई किलो अपना दे देता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। Yes, yes, please. So I am Vishal Jindal. I'm the co-founder director for Biryani by Kilo, and my other co-founder is Kaushik Roy. And I'm from IT background. I've been in more in private equity, hedge funds. तो 5 साल पहले हमने कहा बिरयानी बाई एक बिरयानी की चेन शुरू करेंगे, बिकॉज बिरयानी इज इंडिया हेरिटेज। हमें लगा एक पैन इंडिया वर्ल्ड वाइड ना इंडिया की चेन होनी चाहिए। एंड वी सेड एक बिरयानी फ्रेश फॉर एवरी ऑर्डर, क्योंकि बाकी लोग ना बड़े बड़े बर्तनों में 10-20 किलो की बना के रख देते हैं। तो बिरयानी बाई किलो's USP is that we make बिरयानी दम कुक्ड फॉर एवरी इंडिविजुअल ऑर्डर। तो जब कस्टमर का ऑर्डर आता है उसके बाद उस हांडी में दम कुक होती है, उसी में डिलीवर होती है। इसीलिए हमें 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि पिज्जा को आप 7-8 मिनट में फ्रेश बना सकते हैं, बिरयानी को दम फ्रेश बनाने में 30-35 मिनट चाहिए। इसलिए हम 1 घंटा लेते हैं। बट ऑल्सो इट्स वेरी हाइजेनिक, इट्स फ्रेश। और हम बेस्ट राइस जो 2 years नेचुरली एज्ड बासमती है दावत का, which is like 200 rupees per kilo, best meat cuts, best spices from Kerala. So it is a labor of love. अभी हमारे 40 outlets हो गए इंडिया में। मुंबई में आप जाएंगे, मुंबई खा सकते हैं, पुणे, दिल्ली, Congratulations. जयपुर, लुधियाना, भोपाल, कानपुर। So we are in, and we'll be 20 cities, and we should be pan India by the end of this year. So touchwood बहुत अच्छा चल रहा है, and it's thanks to people like you who are trying and validating us. But आप बॉम्बे भी जाके ट्राई करिएगा, अपने दोस्तों को भी ट्राई कराइएगा। Definitely, and I'm such a biryani lover that now since I know that there is such a place who will deliver authentic Lucknowi and Hyderabadi biryani, Yeah. I'm all in for that. I'm game for that. Yeah, I know, and so many of my friends, I even want them to try it because honestly, बहुत जगह की बिरयानी खाई है, of course, बहुत मुझे हर जगह पे बिरयानी नहीं पसंद आती because sometimes the rice is too much, sometimes it's too dry. So a right biryani, finding a right biryani is like finding true love. No, I think And I good. found it, and I have found it. चलो, आपको एक ट्रू लव तो मिल ही गया और एक एक्टिंग मिल गई, 2 हो गए। हाँ, sorry, एक true love मैंने मिल कहा गया। एक ट्रू लव एक्टिंग मिल गया, एक ट्रू लव बिरयानी मिल गया बीबी के, 2 तो हो गए। और क्या चाहिए बस। तीसरे का हमें पता नहीं। वो बात की बात है। तो ऑल्सो I like to say कि अगर कुछ लोगों को कोरोना की वजह से people are little careful about कि भी safe है कि नहीं, बिरयानी बाई किलो we were the first ones to take on. We are a 1,000 people company, very professionally run. So we were the first ones to put out the safety video, all the safety measures which are guidelined by WHO. We sanitize our kitchen every hour. All employees, outlet employees' temperature are put on website. Anyone can see every morning. Every delivery bag is sanitized every hour, after every order. And because biryani is dum cooked in that handi and it's sealed, only the customer opens it. It's quite sealed. There's a tamper-proof sealed bag. So we have all this on the website on a safety standards tab. Anyone can see that. So I think people because of its seal only, it gave me a hard time opening it with the knife. But it was worth it because अंदर जो खजाना निकला था वो it was worth every bit of मेहनत। और इंदौर आपको क्या, मैंने सुना वहाँ की चाट बहुत अच्छी है इंदौर की। Are there some things which are particularly famous in Indore? आप मतलब चाट एक्चुअली पता है इंदौर में बहुत ज्यादा नॉनवेज कल्चर नहीं है। लाइक you'll get non-veg food, of course, non-veg restaurants बहुत है, but सिर्फ बॉम्बे में ना कि हर फोर्थ शॉप आपको ओपनली नॉनवेज की मिल जाएगी एंड ऑल दैट। सो इंदौर में वो स्ट्रीट नॉनवेज, एक्चुअली स्ट्रीट फूड जो नॉनवेज होता है उसका कल्चर नहीं है। तो यहाँ पे आपको वेज वैरायटीज इतनी मिलती हैं, चाट वैरायटीज इतनी मिलेंगी दैट एक्चुअली आई डोंट इवन मिस नॉनवेज। वेज इज सो गुड, सो चाट इज वेरी गुड, पानी पूरी। When veg is so good, so what is your favorite cuisine? From chaat to Japanese to Italian to Chinese, what is your favorite? See, when I used to be a non-vegetarian, तब तो मुझे बटर चिकन के आगे और कुछ दिखता ही था, and biryani of course, like chicken biryani. I'm not fond of mutton, so I eat chicken. I used to eat chicken biryani. अभी since I have become this vegetarian, so I really like. तब भी मुझे taste चिकन वाला और नॉनवेज वाला चाहिए, so I prefer that soya Well- चाप्स होते हैं ना, so
That's one of my most favorite things. Chinese is my most favorite food. Indie Chinese. Hindi And chai. yeah, I love that. Apart from chaat and all, pani puri to I can eat it right after waking up. नींद में से उठ के भी कोई खिला दे pani puri. But Bombay में how's the pani puri chaat? Bombay also good enough? Like yeah, ठीक है. Yes, no, it's very good. Actually, ऐसा होता है ना that so many people who have been like immigrated from Indore to Bombay, तो उनको बॉम्बे की पानी पूरी नहीं पसंद आती है. But I personally believe कि शायद मैं इतना ज्यादा रह ली और वहीं पे इतना ज्यादा खा लिया है कि yes, even पानी पूरी there is so good. हमारे यहाँ पे फ्लेवर्स बहुत ज्यादा होते हैं. इंदौर में ना हर चीज को अपनी तरह से स्पाइस अप कर देते हैं. So वो अलग स्पाइसेस है, वहाँ बॉम्बे का अलग टेस्ट है, but both of them are equally good. I will say that. पर आपको वेज में नॉन वेज का जो मजा चाहिए सोया चाप में आप कह रहे हो, पर आप हमारी कटल बिरयानी भी बिरयानी भाई किलो की ट्राई करिएगा. इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ फ्लेवर. हाँ Done. Because अभी जैसे आपने मुझे बोला, मैंने शायद मेन्यू में देखा नहीं ठीक से. So I just ordered veg and I ordered non-veg for them. But I'll definitely try that. And kathal is actually my favorite because non-veg का alternate यही है, soya chap and kathal. कटल और इवन पनीर बिरयानी, पनीर भी आप ट्राई करिएगा. पनीर इज क्वाइट I गुड. don't like paneer. I don't like paneer, but okay, I can try someday. So any characters from what is your dreams for Vaishali Thakkar? Any like you want to now go Bollywood, big movies, what else? Matlab web series, what do you really want? Of course, every actor dreams for that. I did a film last year. I shot for that, and we had to release it this year only. So they were waiting. The producers were waiting, and even I wanted it to be released in theaters because of the pandemic. Her movie bhi OTT पे आ रही है. So even I was wishing, but now the situation that we are facing every other day. So even they have decided that they'll release it on an OTT platform. So we are now planning for that, and very soon you'll see me in a movie. नहीं शो सी मुझे तो आपको देख के मतलब आई डोंट थिंक यू आर इवन वन बिट एनीवेयर लेस फ्रॉम एनी करीना कपूर आलिया भट्ट, सो आई थिंक यू विल गो अ लॉन्ग वे. Thank you. Such a compliment. So and so what are you looking forward कि लॉकडाउन खत्म हो तो क्या just to start acting or travel or go out and eat, what you are looking forward? I have so many other dreams like traveling related. मुझे while traveling also I want to entertain people. So I on my YouTube channel. I आपके started this channel as a travel channel. YouTube channel का नाम क्या है? I would also like to see. It's Vaishali Thakkar. वैशाली टक्कर. My name, yeah. So उसमें actually मैंने आप first videos पे आप देखेंगे तो वो travels related. I just wanted to try that how do I do it. So I did not go any longer like any further. I went to Lavasa. Mumbai से बहुत ज़्यादा पास में है. And it's like a kind of a hidden gem. Not everybody knows about Lavasa. पुणे पास ही है, right? Yeah, पुणे के पास. तो बहुत ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं था. अजीत गुलाबचंद हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, राइट? अजीत आई थिंक पुणे के पास है, आधा 1 घंटा, राइट? हाँ. या पुणे के पास से पुणे से आगे है. Correct. पुणे से आगे like 1 hour somewhere. So I went there and I made a vlog on that, and it was quite liked by people. उसके बाद से I was like, then lockdown happened and I was doing something from my home only, but that's not exactly what I wanted to do. Then I started planning for like funny story vines kind of stuff for my channel, and then I was creating that, and again this stopped. So now I think I'll resume it and I'll come back with a bang with something amazing. So I have this dream that I want to roam around the world and make videos and entertain people even while roaming and everything. So yeah, that I'm gonna do. No, I think you'll do it very well क्योंकि like you said कि आपको travel अंदर से मन है और acting तो आपके अंदर से निकलती है, तो I think you'll spice up any role or any place. So which place? Acting is in my soul, travel is in my heart. So or no, but which places are you looking? Europe, South America, Asia, Australia? कहाँ जाने की सोच रहे हो? Europe, Greece, Istanbul, Turkey, and all the places that has water and beaches. I want to go to all the places that has islands, like almost all the islands of the world. So I am such a water baby that आप मुझे बोलो कि कल गोवा जाने से I'll go, no matter what. So, and when you go to a city, you like, of course, you like nature, beach, but do you like museums, culture, food, people, everything? Food, of course, but honestly, not
not very fond of this museums kind of thing. या मुझे I don't know, मुझे बहुत ज्यादा आर्किटेक्चर वगैरह का शौक नहीं है. नहीं Of है. course कोई चीज अच्छी है तो you'll appreciate it, but ऐसा हम्म. नहीं कि अरे यार वो म्यूजियम में जाके देखना है या वो what you say that Asian things and all that. So ऐसा कुछ मुझे देखने का बिल्कुल शौक नहीं है. But if I'll be a like professional traveler then I'll go. और शॉपिंग का, you like shopping? I like shopping. Who doesn't like shopping? Everybody loves shopping. But also there's one very weird thing about me that weird and nice, that I don't take a lot of time in shopping. I quickly buy because मुझे पहन के घूमने में ज़्यादा interest है rather than spending all my time in shopping. So I don't do that. No, I think so. I think so. You will have a good career, मतलब small career, part career, like a travel blogger and a YouTube blogger, right? Travel blogger, yeah. Yeah, I think you'll You do. never know. That can be my main career choice also. You never Yeah. know. So I'm sure a lot of companies, brands will sponsor कि ये चीज दिखा दो. I think you're quite a popular one, so I think. बस यही चाहिए. हो जाएगा. तो कब से, तो महीने में जल्दी शुरू करने वाले हैं? Yeah, as soon as we get done with the pandemic, कोरोना जाए तो हम बाहर निकले. कोरोना से पहले चाहे कुछ नहीं हो सकता. नहीं जल्दी होगा. तो आई थिंक आप बिरयानी बाई किलो की बिरयानी ट्राई करते रहिए, एंड वी विश यू ऑल द लक फ्रॉम योर ट्रेवल करियर, एक्टिंग करियर. आई थिंक यू डिजर्व नथिंग बट द बेस्ट, सो यूल डू गो वेरी. Thank you so much and wish you the same. अभी 40 outlets हुए हैं, make it 400 and across the globe. Okay, so no matter in which country I am, I can always taste biryani by kilos biryani. बिरयानी बाई किलो 1-2 साल में बहुत कंट्रीज में मिलेगा. वी प्रॉमिस यू. Yes, you do it. Thank you so much. Thank you so much. Bye bye. Nice talking to you. Bye.